Children, how are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we read about the rotation of the earth, which causes day and night phenomena. Okay, then before moving ahead, I want to raise one question from you. What causes change of seasons? Which motion of earth causes change in seasons? Yes, your guess is right, children. The revolution of the earth around the sun causes change in seasons. So our today's topic is revolution of the earth. So children, there comes revolution of the earth. So children, while rotating on its axis, we already know the earth completes one revolution around the sun in an elliptical orbit in 1 year. So children, elliptical shape means egg shape or oval shape. Okay. So to be very specific, the earth completes one revolution in 365 days and about 6 hours. तो अर्थ कितना टाइम लेती है बच्चे वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में? फुल 365 डेज एंड अबाउट 6 आवर्स. ओके, एंड अपनी कन्वीनियंस के लिए हम 365 डेज ही कहते हैं. फॉर आवर कन्वीनियंस बच्चे वी कंसीडर 365 डेज इन अ ईयर. 6 आवर्स को बच्चे हम आफ्टर 4 ईयर्स किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इन अ फुल 1 डे. And add that day to February. And after every 4 years, there will be a leap year having February with 29 days. Okay. So children, the year of 366 days is called the leap year. हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है जिसमें कि फरवरी 29 डेज़ का होता है. ओके, क्योंकि जो 6 आवर्स बच जाते हैं हर एक साल से उनको मिला के 24 आवर्स बन जाते हैं आफ्टर एवरी 4 years. ओके, एंड मेक्स a leap year. Then there comes बच्चे do you know में क्या है? The distance between the earth and the sun changes in its course of its revolution on the elliptical orbit. सन इज स्टेशनरी बच्चे, सन तो स्टेशनरी है बट जब अर्थ रिवॉल्व करती रहती है तो उसका सन से डिस्टेंस चेंज होता रहता है. यहाँ आपको अर्थ सन से नज़दीक नज़र आ रही है बट हियर इट इज़ फार फ्रॉम द सन. ओके, सो द मिनिमम डिस्टेंस 147.5 million kilometers between the earth and the sun is on 4th January, whereas the maximum distance 152.6 million kilometers between the earth and the sun is on 4th July. Okay, this will make you more clear the minimum and the maximum distance between the earth and the sun. Okay, then children, revolution of the earth and the seasons. We know that rotation and revolution of the earth are very essential for causing day and night and occurrence of various seasons. So which rotation motion of the earth is related to change of day and night, and revolution of the earth causes occurrence of various seasons. So let us find out the phenomena of varying length of day and night and the occurrence of different seasons on the earth with the help of a diagram. Okay, so children, as you can see, this diagram shows that the path of Earth's revolution and the 4 positions of the Earth on particular dates. The positions indicate the 4 seasons and their change one after the other and form the cycle of seasons. So children, while the revolution of the Earth on 21st March and 23rd September, there will be equinox. Equinox means day and night on both the hemispheres are equal. Okay, and in the northern hemisphere there's having spring, यहाँ पे spring season होता है, whereas in southern hemisphere there is autumn season. Okay, on 21st March northern hemisphere is having spring whereas southern hemisphere is having autumn. Okay, and on 23rd September northern hemisphere is having autumn and southern hemisphere is having spring. Okay, so बच्चे on both these dates डे एंड नाइट इक्वल होते हैं दोनों ही हेमिस्फेयर में. ओके, जबकि सीज़न दोनों में डिफरेंट होते हैं. ओके, देन चिल्ड्रन ऑन 21st June there are summers in northern hemisphere and winters in southern hemisphere. So children, on 21st June there is summer solstice in northern hemisphere. Northern hemisphere is having summers and southern hemisphere is having winters. Okay, and 21st June is the longest day in northern hemisphere whereas it is shortest day in southern hemisphere. Okay,
And then 22nd December बच्चे northern hemisphere is having winters whereas southern hemisphere is having summers. Okay, and it is longest day in southern hemisphere and it is shortest day in the northern hemisphere. Okay, so these are the 4 major dates related to the revolution of the earth and change of seasons. Okay, सो बच्चे इसी अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण ये फोर मेन डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और चेंज ऑफ सीजन्स भी इसी कारण होता है. सो चिल्ड्रन लेट अस डिस्कस पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21st जून मोर क्लियरली. ओके, व्हेन द रिवॉल्विंग अर्थ रीचेस दिस पोजीशन, 21st जून को बच्चे जब अर्थ इस पोजीशन पे पहुंचती है, नदर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन. जो अर्थ का पार्ट होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट होता है जो सन को फेस कर रहा होता है. ओके, सो नदर्न हेमिस्फीयर इज facing the sun and the southern hemisphere is away from the sun. और southern hemisphere दूर होता है बच्चे सन से. and जो rays होती हैं सन की वो vertical होती हैं at the tropic of Cancer, and it means at 23.5 degree north tropic of Cancer सन की direct rays वहाँ पे पड़ रही होती हैं. okay, this area is having direct rays of the sun. Okay, on 21st June the larger portion of northern hemisphere faces the sun. मोस्टली बच्चे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन को फेस कर रहा होता है. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रिसीव्स मोर हीट एंड इट इज समर सीजन हेयर एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज समर सॉल्स्टाइस इन दिस हेमिस्फेयर. इस सिचुएशन को बच्चे समर सॉल्स्टाइस कहते हैं इस हेमिस्फेयर में. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 21st जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, whereas the situation in the southern hemisphere is just opposite. बिल्कुल इससे उल्टी होती है. ओके, द नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज. रातें लंबी होती हैं दिनों से बच्चे. एंड द अंटार्कटिक सर्कल रिमेन्स इन कंप्लीट डार्कनेस. ओके, एंड जो अंटार्कटिक सर्कल है वो टोटली कंप्लीट डार्कनेस में रहता है. 6 months की वहाँ पे नाइट ही रहती है. गॉट इट. द सन रेज आर मोर स्लांटिंग. और जो अंटार्कटिक सर्कल है वहाँ पे स्लांटिंग रेज पड़ती हैं सन की. therefore it is winter season in southern hemisphere और वहाँ पे winter season रहता है southern hemisphere में. so this situation is called winter solstice. okay, and इस situation को southern hemisphere में क्या कहते हैं? winter solstice. okay, got it. let us discuss the position of the earth on 23rd September बच्चे. after 3 months the revolving earth comes to this position. 21st जून के बाद बच्चे अर्थ 3 months के बाद इस पोजीशन में आती है. the sun shines vertically over the equator. अब इस टाइम जो सन रेज होती हैं सबसे ज़्यादा डायरेक्ट कहाँ पे पड़ रही होती हैं? इक्वेटर के ऊपर. ओके, द डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन. डे एंड नाइट आर इक्वल. ओके, एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज इक्विनॉक्स. ओके, बोथ द हेमिस्फेयर्स रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट. दोनों हेमिस्फेयर में बच्चे बराबर हीट पड़ रही होती है और इसी को ही इक्विनॉक्स कहते हैं. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू सीजन it is autumn season in northern hemisphere. therefore this position is known as autumnal equinox. इसे autumnal equinox कहते हैं बच्चे. and at the same time the southern hemisphere has spring season called vernal equinox. okay, जबकि southern hemisphere में बच्चे spring season रहता है and it is known as vernal equinox. okay, then there comes position of the earth on 22nd December बच्चे. 22nd December को the earth continues to revolve and the southern hemisphere gradually come towards the sun. as you can see बच्चे, the earth continues to revolve and the southern hemisphere gradually come towards the sun. okay, and in this position the sun rays are vertical at the tropic of Capricorn. okay, और इस पोजीशन में बच्चे जो सन की रेज डायरेक्ट होती हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, देन द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेज टुवर्ड्स द साउथ पोल एंड द नाइट्स बिकम शॉर्टर. सो बच्चे साउथ पोल की तरफ दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं. ओके, सो अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. दिस इज समर सॉल्स्टाइस ऑफ southern hemisphere. okay, and this is winter solstice in northern hemisphere. okay, and opposite to it bache, the northern hemisphere in this situation is away from the sun. as you can see, जो northern hemisphere है वो बहुत दूर है sun से. okay, and the days are shorter than nights.
डेज यहाँ पे छोटे हो जाते हैं और नाइट्स बड़ी हो जाती हैं. ओके, द सन रेज आर मोर स्लांटिंग, बहुत ही ज़्यादा स्लांटिंग रेज पड़ती हैं सन की नदर्न हेमिस्फेयर में, एंड इट इज़ विंटर इन दिस हेमिस्फेयर. सो नदर्न हेमिस्फेयर में बच्चे उन दिनों विंटर रहता है, सर्दियाँ होती हैं. ओके, एंड दिस पोजिशन इज़ नोन एज विंटर सॉल्स्टाइस इन नदर्न हेमिस्फेयर. गॉट इट? Then on 21st March, bache, the earth continues move further and come to this position. Okay, after 3 months the sun rays are vertical again over the equator. अब सन रेज कहाँ पे डायरेक्ट पड़ना शुरू हो जाती हैं बच्चे? फिर से इक्वेटर की तरफ. ओके, द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट बिकम्स इक्वल इन बोथ द हेमिस्फेयर्स. और इस सिचुएशन में बच्चे इस डेट पे डे एंड नाइट फिर से इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे अगर डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं तो बोथ हेमिस्फेयर्स में इक्वल हीट जाएगी. ओके, फॉर एग्जांपल इक्वल हीट जाएगी एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट बिकम्स इक्वल इन बोथ द हेमिस्फेयर्स. फॉर एग्जांपल 12 hours day and 12 hours night. Okay, both the hemispheres receives equal amount of heat. Got it? It is spring in northern hemisphere. कौन सा सीजन रहता है बच्चे नदरन हेमिस्फेयर में? स्प्रिंग सीजन रहता है, बसंत का सीजन रहता है, एंड इज कॉल्ड वर्नल इक्विनॉक्स. ओके, और यहाँ पर इसे वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं. एट द सेम टाइम सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है? ऑटम सीजन होता है एंड इज कॉल्ड ऑटमनल इक्विनॉक्स. जबकि हमने पिछली सिचुएशन पढ़ी थी बच्चे, तब ऑटोमनल इक्विनॉक्स आपका नदरन हेमिस्फेयर में था. ओके, एंड वर्नल इक्विनॉक्स आपका सदर्न हेमिस्फेयर में था. नाउ द सिचुएशन इज ऑपोजिट. ओके, children, thus the cycle of seasons continuously goes on year after year. So same इसी तरह से बच्चे आपकी season of cycles continuously चलती रहती है due to revolution of earth around the sun. It never ends. Okay, it is never ending process. Got it? So बच्चे, this will make you more clear to understand the seasons. With the revolution of the earth बच्चे, there is change in seasons. So children, as you can see, each and every change due to revolution of the earth around the sun, you can clearly see the change in seasons, and the difference between the earth and sun is clearly visible to you. Okay, so bache, understand these motions of the earth very clearly and understand how seasons are changed, kaise season change hote hain due to revolution of the earth. Children, there comes to, as we have already discussed, the North Pole has darkness for about 6 months from 23rd September to 21st March, whereas South Pole has sunlight during this period. Okay, दोनों पोल्स में से बच्चे एक पोल पे 6 महीने की रात रहती है, जबकि दूसरे पोल पे 6 महीने का दिन रहता है. तो नॉर्थ पोल में जब ये 6 महीने की नाइट रहती है फ्रॉम 23rd September to 21st March. Okay, and next to the North Pole has sunlight for about 6 months from 21st March to 23rd September, while the South Pole has night during this period. North Pole में कब सनराइज रहती है बच्चे? 6 months के लिए from 21st March to 23rd September, जबकि South Pole में इन दिनों 6 महीने की रात रहती है. Got it? So children, clearly understand the concept of the rotation and revolution of the earth, which causes day and night and change in seasons. Okay, so that's all in today's topic. Revise your topic. Okay.